So we were talking about moment of inertia, and I told you about two laws, two theorems, parallel and perpendicular axis theorem, right? ठीक है ना? So remembering what we did in center of mass, please do this. And after you've done this, then here. सर रेड वाले को एक्सेस लेकर के हाँ रेड वाला एक्सेस अगर मैंने एक्सेस नहीं लिखा है ना तो इधर वैसे गलती हो गई है, बट अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक्सेस जनरली पहले से लिया हुआ है। माइनस कर दिया गया पार्थ।
So I'll show you this one. Should be able to figure it out. Just like before, we would consider this to be a solid 13. We are 29. Axis shift किया था. Axis shift करना हो सकता है. 11. So we have a solid blue disk. So I blue will be equal to m, mass is given, equal to 2r square by 2. Yeah, so this is not the problem. Very easy. Problem is this guy. I green. So the green disk is a disk of negative mass density. But since we are not going to deal with mass densities here, I'll just say it is a green negative mass disk. And I want to find the moment of inertia of this green negative mass disk. So first you have to tell me the mass of that object. What will be the mass of the object? Very good part, yes. So minus m by 4 into r square. Right? But this is the moment of inertia of the green disk about this axis, and I'm not interested in this. I'm not interested in this axis because if I want to add, or in this case subtract, the moment of inertia of the blue disk with the moment of inertia of the green disk, then the condition is that both the moments of inertia must be calculated about the same axis, right? So this I green and I blue are along different axes. So to put them same axis, all I have to do now is I have to write minus m by 4. That will be the parallel axis theorem. So this comes out to be how much? What is the moment of inertia of the green disk about the axis OO dash, let's say, be equal to minus mr square by 2. So moment of inertia of the object will be equal to 2mr square minus mr square by 2, which is equal to 3mr square. आया समझ में सबको? सर जो आई ग्रीन था हाँ उसमें माइनस m by 4 r square by 2 क्यों नहीं? ओ हाँ सॉरी मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? माइनस मैं सोच रहा हूँ सबका 8 आ रहा है, मेरा 8 नहीं आ रहा है। 13 आएगा ना? 3 कैसे आएगा? सर हम गलती करी क्या मैंने? हाँ सर हम इसमें COM के अबाउट नहीं निकाल सकते, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया। नहीं, स्वयं के अबाउट कैसे निकालें? स्वयं के अबाउट कैसे निकालेंगे? We can't do that.
because then what you will be doing is you'll be finding the moment of inertia of this object about this axis. इसको तो निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन चाहिए होगा, क्या? सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते? किया ना, मैंने तो वही किया, सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए बस। अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट निकाला है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फ्रीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टीमेटली इज द रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ मास। एक डिस्क के ऊपर अगर दूसरी डिस्क रख दी है, then the moment of inertia of the two disks will be the sum of moment of inertia of the individual disks. In this case, it will be the difference because the green disk is having negative mass. By 4 क्यों होना चाहिए शोना? By 2 ही होगा ना, moment of inertia of a disk about an axis perpendicular to its plane is and passing through the center is mr square by 2, right? चलो स्फीयर के लिए बताओ, स्फीयर के लिए बताओ। I'll just change the slide. I'll give you the next question. सॉलिड है भाई, होलो स्फीयर में होलो कैसे करेगा? बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, उसमें 2/5 का फैक्टर है और m की वैल्यू दूसरी हो जाएगी। Please be careful, however, I may, or the person setting the question may tell you that the mass of the final object is m. That is also a variation in this question. Mass of the final object is m. Then tell me the moment of inertia. In that case, you have to actually calculate the mass of the blue disk and the green disk or the sphere, as the case may be. किसका अंशुल, किसका बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही। माइनस m है ना अपनी पिक्चर, उसका जो हमने याद है कैविटीज के बारे में क्या कंक्लूड किया था, दैट
we will consider a cavity. हाँ याद आ गया ना. जिसको नहीं याद है उसके लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ. अगर कहीं पे कैविटी दे दिया गया तो रिमेंबर वी विल कंसिडर दैट टू बी a superimposition of or coexistence of a positive mass object with a negative mass object, and wherever they coincide, wherever they superimpose, the net mass will be zero, and you will have a cavity. हाँ प्रतीक्षा, वेरी गुड. यस, तो आंसर देख के याद आया. क्वेश्चन 3 ये है, क्वेश्चन 2 ये है. ये किसका बता रहा है? ठीक है. नहीं नहीं संचय गलत. नहीं सुना, गलत. एक मिनट में.
नहीं आयुष गलत है थर्ड का ओ सॉरी 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 मैंने गलत क्वेश्चन पूछा सॉरी 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 मैंने गलत टर्न करा दिया भाई उस तेरा आंसर सही नहीं सॉरी संचय का सही मैंने गलत ये किसका है प्रतीक्षा नहीं देखो so if I ask you to find let's say the moment of inertia of a semicircular disk and what we do is we complete the object and if the mass of this half disk was m surely the mass of this half disk will also be m. Then we say that the moment of inertia of the complete object minus m because I'm not superimposing a negative mass there. I'm saying I'm completing the semicircle. So there was one semicircular disk there, and I have put another semicircular disk there, so that now I have a complete disk. So this is how we are going to find moment of inertia of cut objects. That means objects which have been cut from objects which are, for which we already know the moment of inertia. So moment of inertia of complete object will be 2m into r square by 2. And then it is very, very simple. Moment of inertia of cut object simply equal to the moment of inertia of complete object divided by the number. I'll just write number. ठीक किया क्या? कुछ गलत किया. So I of semicircle would be 2m into r square by 2 divided by 2, which is equal to mr square. So it turns out that the moment of inertia of a half disk is exactly the same as that of a disk. In fact, if I were to take, let's say, a sector of a circle of mass m and I asked you the moment of inertia about this axis, then moment of inertia of the complete object would be nm r square by 2. So the moment of inertia of the sector will be equal to nm r square by 2 by n is equal to mr square. Right? So moment of inertia of cut objects निकालने के लिए complete the object and then divide by the number of the total elements which completes the object. So in this case, how do I complete the object? In
this case, how do I complete the object? डिस्क नहीं, डिस्क कहाँ है? स्क्वायर बनेगा ना ये? हाँ स्क्वायर प्लेट सॉरी हाँ स्क्वायर. Where is the square? Where is the square? सर रिमेनिंग हाफ एक और ट्रायंगल बना देंगे तो सेम कर देंगे इस पे. नहीं. This is the catch. You have to be just careful about it. एक बार आपको बता दूंगा तो आप कभी भूलोगे नहीं उसको. The catch is that the axis should remain the same. Axis should be same. Right. So if you give me an argument that let's complete the square like this. सर उसको टाइम करके हम एक स्क्वायर बना सकते हैं. हाँ वही. हाँ एक्सिस यहाँ आ जाएगा ना उसका. ये गड़बड़ हो जाएगा. This is not how you are going to. This is not how you are going to. नहीं बेटा हाई फाई नहीं सोचना है. ये रहा स्क्वायर. स्क्वायर ही तो कंप्लीट करना है ना. ये रहा स्क्वायर. एक्सिस सेम रहना चाहिए. ये ध्यान रखना. तो अगर इसका मास m था तो इसका भी m हो जाएगा, इसका भी m हो जाएगा, इसका भी m हो जाएगा. And the moment of inertia of the completed object will be equal to 4m into root 2l. The length of the square now becomes root 2l square divided by 6. So moment of inertia of the triangle will be equal to the moment of inertia of the completed object divided by 4, which is equal to ml square by. नहीं समझी. हाँ क्या पिक्चर फिर से बोलो. अगर वो एक्सेस वाली चीज नहीं समझी और एक बार बताओगे. हाँ इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, we are completing the object. Whether I take a semicircle or whether I take a sector and I complete the object like this, the axis should not be disturbed. So if I complete the square in the blue wala thing, in the blue wala manner, the axis of the object will be here, right? यहाँ पे एक्सिस रखने का ये स्क्वायर का कोई मतलब नहीं. सिमेट्री होनी चाहिए. तो इधर मैंने वहाँ पे एक्सेस रख के उसे पी पे ला सकते हैं ना. क्या कर सकते हैं? वहाँ पे अगर स्क्वायर के डायगोनल पे एक्सेस हुआ तो उससे पी पे लाया जा सकता है ना. नहीं लाया जा सकता. सर क्यों नहीं? क्योंकि दोनों में से कोई सेंटर ऑफ मास पे लाई नहीं करेगा. जब आप इसको सेंटर पे आप निकालोगे और आप बोलोगे ये ब्लू डॉट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 6 है, 2 ml स्क्वायर बाई 6 है. फिर आप बोलोगे कि ये ट्रायंगल के लिए ml स्क्वायर बाई 6 है. अब आप बोलोगे नहीं मेरे को तो बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है. तो यू विल नॉट बी एबल टू बिकॉज़ दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड and then neither of these 2 points are on the center. But what you can do and what you should not do, what you can do is that you can shift from here to some point where it is the center of mass of the triangular object and then shift it to the point P. You will get the same answer, but it will be very, very contrived, very, very lengthy. So it is better to better to stick with the same axis. हाँ भाई, इसका कौन बता रहा है आंसर? नेक्स्ट ये है.
हाँ भाई संचय तो बता ही दिया था ना, इसका नॉर्मल वाला जो इससे पहले मैंने शरद वाला पूछा था उसको बता ही दिया था, आपको कुछ नहीं करना है, तो सीधा सीधा है। हाँ मास है। नहीं अंशुल ये भी नहीं यूज हो सकता है ना, बिकॉज मैंने एक्सिस दिया वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना। परपेंडिकुलर थ्योरम लगाने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि नहीं आर्यन गलत है, सिमेट्री नहीं है ना, नहीं है सिमेट्री। हाँ 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 ओ डैश प्लेन में है, स्क्वायर के प्लेन। वेरी गुड संचय। डिनोमिनेटर एक बार चेक कर लेना संचय, मेरे को याद नहीं है। न्यूमरेटर बिल्कुल सही। So we know the moment of inertia about this axis. We can use the perpendicular axis theorem. The question is really, what is the moment of inertia about this axis?
रियल क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सर्फेस, जो मैंने पहले एक्चुअली से पूछा था। नहीं 15 के टर्म पे नहीं आएगा प्रतीक्षा, बिकॉज में आ सकता है उसकी क्वेश्चन देख के तो नहीं रहा है, बट आएगा नहीं। पहले मेरे को ये ब्लू एक्सिस के, पहले मेरे को ये येलो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। लेट्स डू दिस स्टेप बाय स्टेप, वेरी इजी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द येलो एक्सिस क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, मास m, length l, about an axis passing through its center, and नहीं आर्यन ml square by 6 is actually perpendicular to the plane वाला होता है ना, ml square by 6। हाँ वेरी गुड, it will be ml square by 12। याद आया ना आर्यन? यस सर। मेरे को बताओ आई येलो क्या होगा, आई ब्लू क्या होगा? What will be I about the blue axis? Okay, चलो मेरे को फिर से बताओ ml square by 12 कैसे आया? आई एम चेंजिंग द स्लाइड। ml square by 12 कैसे आया प्रतीक्षा? क्या किया आपने? ml square by 12 कैसे आया? सर 2 times I x x is equal to I, क्यों? क्योंकि प्लेनर ऑब्जेक्ट है और प्लेनर ऑब्जेक्ट है, हाँ। थ्योरम लग सकता है और सिमेट्रिक भी है। आई जेड की वैल्यू है ml square by 6, ये हमें मालूम है, और आई x plus I y will be equal to I z, ये भी हमें मालूम है। And since x and y are symmetrical, therefore I x will be equal to I y, which will be equal to, very good Pratiksha, yes, exactly the answer I will give. I z divided by 2, therefore we have I x is equal to ml square by 12। आया सबको समझ में? शौनक क्लियर है इतना? महक? यस सर। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने ये एक्सिस बनाई, मतलब कि ये एक्स वाई एक्सिस को मैंने 15 डिग्री से टेढ़ा कर दिया, इफ अगर मैंने 15 डिग्री से टेढ़ा कर दिया, कैन आई से द सेम थिंग? कैन आई से द सेम थिंग? दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है शौनक? यस सर। ये हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है शौनक? कर दो, दिखाई दे रहा है? लेट मी जस्ट रब आउट द ब्लू वाले, येलो वाले। सिमेट्री है अभी भी? सिमेट्री नहीं है? नहीं सर। नहीं है सिमेट्री? है। अच्छा चल, मेरा मेरा मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैंने ये स्क्वायर पीस ऑफ पेपर को इसके अलोंग काट दिया और इसके अलोंग काट दिया, तो जो 4 पीसेस बचेंगे उसमें से विल यू नो व्हिच वन इज व्हिच? हाँ सर। कैसे पता चलेगा बेटा? सर मतलब दिख जाएगा, रखेंगे दिख तो दिख ही जाएगा? जाएगा। पक्का? और इसमें? नहीं सर, उसमें नहीं दिखेगा बिकॉज चारों पीसेस एग्जैक्ट सेम रहेंगे। फंस गया। देखो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस x0 है तो ये कितना होएगा?
हाँ बिल्कुल सही रहेगा। एक्स नॉट है तो x0 कितना रहेगा, ये ये भी कितना x0 रहेगा, ये कितना रहेगा, x0 पता चलेगा। um, मैं फिर से येलो लाइंस को मिटा दे रहा हूँ। मेरा डायग्राम बहुत खराब बना है बट इट्स ओके। So basically you have this one piece यहाँ पे ये लेंथ कितना है L plus x naught, L by 2 plus x naught है, और ये लेंथ कितना है L by 2 minus x naught है, and then you have this piece where this length is L by 2 plus x naught, this length is L by 2 minus x naught, same for this guy, same for this guy. What do you think? Is it symmetrical or not? No way, Shanak. हाँ सर Actually symmetrical, and this is very weird. This is very you have to think about this because circle में अगर मैंने यही बात सर्कल के लिए करी होती कि I have an axis passing through the center और मैंने वो एक्सिस को टेढ़ा कर दिया, तो you would not have thought twice. You would have said नहीं, blue and yellow are both symmetrical. It turns out that it is exactly the same for a square as well. Why should it be different? अगर मैं स्क्वायर के लिए कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाता हूँ जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्क्वायर के सेंटर पे है, तो these two lines will actually cut the square symmetrically. It does not matter whether they are parallel and perpendicular to the sides of the square. So, if the moment of inertia about the blue axis is again ml square by 2, then what is the moment of inertia about the black axis? Perpendicular axis here. Now, please tell me the perpendicular distance between the two axes. Ghalat answer. Please tell me the perpendicular distance. Nahi Pratiksha, galat answer. That was the other point where could go wrong. That is the wrong answer. What is the distance between these two parallel lines? नहीं, cos 15 नहीं आएगा, L by 2 आंसर नहीं, L आंसर नहीं, no. हाँ, how will you find the distance between these two? हाँ, अब सही निकाला है कुछ। अरे L by root 2, हाँ L by root 2 है, हाँ। हाँ सर वो थोड़ा गलती हो गई। आया समझ में सबको? नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं येलो लाइन और ब्लैक लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उनके बीच में बोलूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। We are not interested in this. This is not the perpendicular distance between the black and the blue lines. How do you find the perpendicular distance? How do you find the distance between two parallel lines के बीच में कैसे distance होता है? हाँ, so all you have to do basically is you have to drop a perpendicular from this guy to this guy. Find this distance. Best part of it is, of course, that this distance is known to us. Ah, very good. Yes. So that नहीं एक मिनट रुको, ओए सब गलत आंसर निकाल रहे हैं। L by root 2 नहीं आंसर, सब गलत हैं, सब लोग गलत हैं।
L by root 2 तो hypotenuse है ना इसका, ये green line है ना perpendicular distance, this is the distance. And therefore we come to the question why 15 degrees. So you may think, अच्छा उससे भी है, ये रेड लाइन L by root 2 है कि नहीं है, पहले ये बताओ मुझे। Yes. ये red Yes. है ना? Then the question why this was 15 degrees, it was 15 degrees so that this would become 60 degrees. Am I correct? This would become 60 degrees. 45 plus. 45 plus 15. Therefore, what is this length? The length कितना है? L by root 2 sin 6. फाइनल आंसर बताओ, मतलब So root 3 L by 2 रूट root root 3 3 L. L by 2 root 2. root 3 L by 2. Okay. So the moment of inertia about the black axis will be equal to ml square by 12 plus m into 3L square by 8, which will be equal to 1 by 12 plus 3 by 8. नहीं, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? इलेवन आना चाहिए था मेरे को यार। क्या प्रश्न? 11 आएगा, कैसे आ रहा है 11? अभी तो 5 by 24 बताया ना। तो वो सर 11 ml square मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर आ देंगे रहा है। 3 by 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 by 12 में, हाँ, तो नीचे दोनों में 24 हो गया और ऊपर 2 प्लस प्लस 9 हो गया। 9 हो मतलब गया। तुम लोग का सही आंसर कैसे आ रहा है? ये तो L by root, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी कि नहीं निकाली थी? मेरा तो नहीं आया। मेरा भी नहीं है। संचय क्या किया मेरा भाई? भी नहीं है। सर मैं कंफ्यूज हो गया था, वो जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहे थे, है? मैं कंफ्यूज हो गया जब आप डिस्टेंस पूछ रहे थे, तो मेरा समय नेट लैग हो रहा था, तो मेरे को लगा आप ये पूछ रहे हो, ये वाला काम। अच्छा, right, so this is the moment of inertia. Okay, next. आ गया ना सबको समझ में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना भी जरूरी होता है. Distance between two parallel lines may not be that obvious. Next. Let's go into 3 dimensions now. 6 square plates. Mass M, length L for find MOI Q about body
center axis. This is clear. This is the cube body center of the इसका आंसर मुझे याद नहीं है। ml स्क्वायर बाय 2 तो नहीं होगा मेरा मेरे ख्याल से। सर दो साइड से मुझे ml स्क्वायर बाई 6 आएगा जिससे वो पास कर रहा है, और बाकी हाँ। सब से मुझे ml स्क्वायर बाई 3 आ रहा था वेरी गुड, यस। 4 से। ml स्क्वायर बाय 3 की 12। सर ml स्क्वायर बाई 12 तो मतलब उसके उधर से होगा, फिर पैरेलल एक्सिस प्लस हाँ, बिल्कुल। ml करना स्क्वायर पड़ेगा ना। बाय 4 ऐड करेंगे। ml स्क्वायर बाय 4 ऐड। हाँ हाँ सर। 5 ml स्क्वायर बाय 3 आ रहा है। So about this face, the moment of inertia would simply be equal to ml square by 6 plus ml square by 6. About this axis, the moment of inertia would be ml square by 12, but we are not interested in this axis, so we'll shift the distance of L by 2, so this would be plus ml square by 4. And this would be 4 times because there are 4 sides. Basically, if I take this common, 1 by 6 plus 1 by 6 plus 4 times 1 by 4 plus 1 by 4. Yeah. So this will come out to be ml square 1 by 3 plus 1 plus 1 by 3, 2 by 3 plus 1, 5 ml square. Last step कौन सा वाला तरीका है? There are 6 faces, right? So out of these 6 faces, the green ones, the shaded green ones, the front face and the back face,
For them, the moment of inertia would be simply ml square by 6. Will you agree with that, Tulika? The moment of inertia for the two green faces will be simply ml square by 6. Yes? No? Oh, Tulika. Draw. Okay. So if you are agreeing with this, then what can you tell me about the moment of inertia of this blue face? The moment of inertia of this blue face about this yellow axis will be equal to ml square by 12 from the perpendicular axis theorem, because the blue face will have a moment of inertia of ml square by 6 about this axis. And then I just apply the perpendicular axis theorem to find the moment of inertia about this yellow axis. And I will get ml square by 12. Will you agree with that, Tulika? बताओ, let me please. आ गया समझ में? Then you apply. Oops, sorry. Then you apply the perpendicular axis theorem, parallel axis theorem to find the moment of inertia of this side about the yellow, about the red axis, and then you simply multiply by 4 because there are 4 blue sides. Okay. Since we are in 3 dimensions, the curve y is equal to 8x square is rotated about x axis between x is equal to 0 and x is equal to 10. Find not keep the same. Find moment of inertia of the solid of revolution about y-axis. Density
introduction is clear to everyone. We take a graph y is equal to 8x cubed. Then we रो के टर्म्स में आएगा देखो पिक्चर. And we rotate it about the x-axis. We get a solid of revolution, right? We have discussed this in center of mass. Then I want the moment of inertia about the y-axis of the circuit. Rho और प्रतीक्षा का आ रहा है 64/5. Sure, that's all. So I will say that, look, let's consider at the distance of x a disk on this solid of revolution. We will have a width of x, a radius of, this is the important bit, radius of 8x squared. Let's work out the moment of inertia of this guy, of the green disk that I have drawn. Now, the moment of inertia of this guy, the green disk that I have drawn, about this axis can be easily worked out using the perpendicular axis theorem. And it will be equal to dm into r square by 4. Right? Disk का कोई भी diameter के along moment of inertia is mr square by 4. Perpendicular axis. अब कोई बात नहीं. Just see where your mistake is. Next time, keep in mind that your mistake नहीं करनी. So this is the moment of inertia of the green object about the dotted black axis. This is I disk about dotted axis. But I want it about the y-axis. So surely this must be equal to dm to x squared, because I can use the parallel axis theorem because one of the axes is passing through the center of mass. So this will be equal to dm into 8x square whole square by 4 plus dm into x square. What is dm? dm surely must be density into the volume of the object. So it must be pi into r square x, right? Place this in the original expression. So you get something like this. Ti is equal to pi rho, I will take outside, 8x square raised to the power 4 divided by 4. Dx plus 8x square whole square into x square dx. So I will be equal to pi rho integral of 0 to 2 8x square raised to the power 4 by 4 dx plus 0 to 2 integral of 8x square whole square square.
इसीलिए मैंने 10 गलती किया क्या मैंने यहाँ पे, कहाँ पे प्रतीक्षा, स्टेप 2 में, स्टेप 2 ही बोल रही है ना, नहीं dm r²/4 होएगा ना, dm r²/4 होएगा ना। मेरे पास तो एक अगर मैं ये ग्रीन डिस्क अलग से बनाऊंगा तो आई हैव ए something like this, right? So this axis के about mr²/2, this axis के about mr²/4. हाँ, so दोनों यूज करना है। आया भाई समझ में सबको? Anybody not understanding, please tell me, because now there is no physics involved. Really, there is no physics. It's just maths. It's all about taking elements. We have done this exact question in center of mass, and therefore I decided to give this exact question again. Center of mass में भी हमने, we took out the center of mass of this object, of this solid of revolution. Strictly, it is called the paraboloid revolution. About the y-axis भी मैं इसको rotate कर सकता था, फिर आपको x-axis के about पूछ सकता था। अगर मैं इसको y-axis के about rotate करता, I'll just change the side, please. अगर मैं इसको y-axis के about rotate करा देता, तो ये जो curve है, this would have given us solid of revolution like this. Solid of revolution like this. And then I could have asked, please tell me the moment of inertia about the x-axis or the y-axis. Does not matter. Either cases you are, in either case you are going to draw. You're going to slice this up into discs. In fact, I can then ask you for the moment of inertia of the, it is called the ellipsoid. Only radius changes, yes. I can ask you for the moment of inertia of the ellipsoid, which is given by the expression x² by a² plus y² by b² plus z² by c² is equal to 1. ये कैसा object होएगा? This object on the xyz plane would be ellipsoid like this. मेरा diagram बिल्कुल ही वाहियात है, but so this would be A, this would be B, this would be C, and again you slice this up into discs and you find out the moment of inertia. Although I don't think that this will be there in the exam, but मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ because अभी मैंने 12th वालों को कुछ पढ़ाया बोल के कि एग्जाम में नहीं आएगा और वही आ गया मेंस के एग्जाम में, so it may come, it may be there. चलो, okay, एक और last question. Let's see if you can do this. Now this really needs some application. Okay? Let's see if you can catch this. Everybody, please pay attention. I take a square object, square plate, two-dimensional object. I take a square plate which has a side of L. And I divide this square plate into 9 equal parts by drawing these two lines, these 4 lines. And then I remove the middle part. I remove the middle part. Then for the remaining 8 squares that I have, I again
separate them into 9 equal parts, each of them, and I remove the middle part. Okay, I do this for all these squares that I have. I'm not going to draw for all. So I remove this middle part. And then again, for all the squares that I have, I draw this and I remove the middle part, and so on till infinity. Find the moment of inertia of the final object about the axis of symmetry if mass of the final object is I hope everybody is getting this. I take a square plate of side L and I divide it into 9 equal parts. And then I take out the middle part. Then for the remaining 8 squares, I do this activity again. Take out the middle part. And then M0 nahi hoega beta. No, M will not be 0. Because you see that every time that you take out the mass, you are actually, the mass that you are taking out is smaller and smaller and smaller and smaller. Some part will always be like this. So the final object, जो भी final object है, उसका mass मैं बता रहा हूँ m है. Side of course उसका L ही रहेगा. I'm telling you that the final object has mass m and side is L. क्यों दिमाग लगा रहा है? Mass m equal है. Tending to maths नहीं पढ़ रहे हैं. IIT जाके वैसे बहुत मैथ्स पढ़नी है. Axis of symmetry मतलब वही जो बीच से पास कर रही है perpendicular to the plane. Think about this. I'll give you a hint. All you need is perpendicular and parallel axis. इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए.
चलो ठीक है, तो do this as a homework. Okay, try it out. It's a very interesting problem. You really have to have a grip on perpendicular and parallel axis theorem. Once you see, then it should be easy. So we'll continue in the next class, and in the next class we'll talk about the counterpart of force. The moment of inertia का हमारा यहाँ पे खत्म होता है, and we'll talk about the counterpart of force, that is torque. Okay, and we'll see Newton's second law for rotating objects. Okay. Oh हाँ, ये मैं भूल गया था. Sorry. ये मैं जल्दी भूल ही जाता हूँ बताना, but ठीक है. So let's say that we have a sphere, and we know that the moment of inertia of the sphere is equal to 2 by 5 mr square about this axis. I can ask now, this sphere is equivalent to, if this sphere is equivalent to a point particle having the same mass and rotating about an axis, then what will be the moment of inertia? What will be the radius of rotation of this point particle, so that the moment of inertia of both the objects is same? So this should be equal to mk square, where k is the radius. So if I equate these two, I'll get k is equal to root 2 by 5 r, and this is called the radius of gyration. So any rigid body is equivalent to particle of same mass rotating with radius k. Moment of inertia of a rigid body equivalent to moment of inertia of particle of the same mass rotating with radius k, then that radius is called the radius of gyration. Very simple. Why is it used? Again, very simple. I don't want to tell you it is a sphere. I don't want to tell you it is a. अब वो जैसे ही मैं sphere बोलता हूँ तो शौनक पूछता है कि hollow है कि solid है. So let's say I don't want to get into that argument, right? So I will just keep saying that radius of gyration of the object is root 2 by 3r. अब उसमें कोई वो ambiguity नहीं है. It will be now to find the moment of inertia, just square the radius of gyration multiplied by mass. Okay. Just another way of giving you moment of inertia. Right? Okay. ठीक है प्रतीक्षा. Name of chapter: rigid body dynamics or rotational motion. either कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों चीज है इसमें. मतलब we are studying both. You can call it either. ऑफलाइन कब चालू होगा हार्दिक? मुझे भी ऑफलाइन की भी I don't know. I have no idea. हाँ, chapter पढ़ा. So we have done moment of inertia. Then we will do torque. Then we will do ये आपका F is equal to ma. Once we will do F is equal to ma का जो counterpart है torque का. Then we will see how to describe. An object executing rotation plus translation motion. Once we see the kinematics of rotation plus translation, then we will talk about
the concept of uh, work energy theorem as applied here, right? So again, everything is going to be revised. Once we have worked out, once we have discussed about the work energy theorem, after that we will discuss about the concept of angular momentum, right, and conservation. So again, there will be collisions and everything. फिर से आएगा वही E का definition फिर से आएगा. इस बार वो E का definition और थोड़ा सा complicated हो जाएगा और थोड़ा उसमें addition हो जाएगा. And finally, we will see. I think question somebody asked. I think it was Tarun who asked me. Finally, we will see the concept of roll. ये अपना toppling. जब कब एक object topple कर जाता है. After everything is done, then I will show you, or I will be in a position to show you how to handle three-dimensional cases of rotation. Last to last slide. So, last to last slide. ये वाला. इसके बाद बोला क्या था? अच्छा, ये वाला. यही वाला ना चेतन. इसके बाद मैंने क्या करवाया? ये वाला क्वेश्चन वाला. अरे भैया ये अच्छा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रोटेशन कैसे लिंक्ड है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ मास है. तो जब हम रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, तो F is equal to ma will then become torque is equal to I into alpha. That is where you will have to find out I. जब हम न्यूटन्स लॉज कर रहे थे तो मास वाज समथिंग व्हिच वाज गिवन, मास वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट डिस्कस्ड. लेकिन यहाँ पे when you apply torque is equal to I alpha, you first have to find the value of I. चलो, ओके, फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं भाई. बाय 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 बाय.